Waving at the rotary wings as 3 Chetaks and 3 advanced light helicopters as well as Bravo 42B led by Commander Harpreet Singh Baweja displaying Naval's air prowess. Seeking इनके ठीक पीछे है 42B प्रतिरोधी और seeking 42 Bravo कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा की अगुवाई में। सीकिंग 42 ब्रावो हेलीकॉप्टर कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा के नेतृत्व में ये तमाम फ्लाई पास नजर आ रहा है और हमने देखा किस प्रकार से 3 चेतक, इसके अलावा 3 एडवांस हाई हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ सीकिंग 42 ब्रावो हेलीकॉप्टर ये नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए गड़गड़ाहट बताती है हमारी बढ़ती हुई रक्षा क्षमताओं की, आत्मनिर्भर होते रक्षा के क्षेत्र में भारत की, और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। Absolutely. And INS Vikrant now would be capable of operating an air wing consisting of at least 30 aircraft, which will be comprising of MiG-29K fighter jets amongst others. And remember why this is special: indigenously manufactured advanced light helicopters that you just saw a while back on your screens, and also some light combat aircraft from Indian Navy will be